Hello everyone, welcome to my YouTube channel. For today's video, my topic is Diabetes Mellitus type 2. As you have seen, we have discussed in our previous video about type 1 Diabetes Mellitus. So in this video, we will covering our next second topic about type 2 Diabetes Mellitus. We have seen Diabetes Mellitus type 2 को हम और क्या बोलते हैं? NIDDM, which is non-insulin dependent diabetes mellitus. In nowadays हम देख सकते हैं कि 90% केसेस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के ही दिखते हैं हमें. एज वी नो दिस इज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़. तो इसमें इंसुलिन क्या कर रहा है? इंसुलिन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? जैसे हमने पार्ट टाइप 1 में देखा था कि इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो रहा है विच इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट. अब टाइप 2 में विच इज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब इसमें इंसुलिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन क्रिएट भी हो रहा है, रिलीज हो रहा है. देयर वी कैन से इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस देयर इज़ नो प्रॉब्लम with insulin resistance. क्योंकि इसमें इंसुलिन रिलीज हो रहा है, बीटा सेल्स इंसुलिन बराबर रिलीज कर रही है, बस प्रॉब्लम कहाँ कॉज हो रही है? प्रॉब्लम विथ रिसेप्टर्स ऑफ इंसुलिन. द प्रॉब्लम विथ जब हमारे ब्लड वेसल में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होता है तो बीटा सेल्स को सिग्नल मिलता है और वो इंसुलिन रिलीज़ करती है. ना इंसुलिन रिलीज़ होने के बाद वो सेल मेम्ब्रेन में जाएंगी. दिस इज़ अवर सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे हाइपोथेसिस होगा. दिस इंसुलिन विल गो टू इंसुलिन रिसेप्टर. दिस आर द इंसुलिन रिसेप्टर. इंसुलिन रिसेप्टर का टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटसाइड में अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर होता है. व्हेन इंसुलिन बाइंड विथ इंसुलिन रिसेप्टर, बाइंड होने पर एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जिस वजह से एटीपी ट्रांसलोकेशन होता है. एंड ड्यू टू एटीपी ट्रांसलोकेशन एक GLUT ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स एक्टिव हो जाते हैं. बिकॉज ग्लूकोज लाइपोलाइटिक होता है, वो डायरेक्टली डिज़ोल्व नहीं होता है, इस वजह से उसको एक ट्रांसपोर्टर की हेल्प लगती है. आफ्टर दिस, ये एक्टिव होने के बाद it will come and bind to a new site of membrane. Then this glucose will come and bind here. After जैसे ही मेम्ब्रेन में ग्लूकोज पास होता है, then what happens we will see. Let's move to the pathophysiology.
पैनक्रियाज बीटा सेल्स रिलीज करेगा इंसुलिन, इंसुलिन रिलीज होने के बाद इट विल गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम, blood vessels, then through blood vessels it will pass through a cell membrane. This is a cell and this is a membrane. This is insulin receptor. When insulin pass through the blood vessels and come across to another side to move across the cell, मेम्ब्रेन पे जो इंसुलिन रिसेप्टर होता है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है आफ्टर ग्लूकोज बाइंड्स टू द मेम्ब्रेन. ओके, नाउ इंसुलिन को रिसेप्टर अलाउ ही नहीं कर रहा है टू एंटर, सो ये हो जाएगा रेसिस्टेंस टू इंसुलिन. अब ये इंसुलिन रेसिस्टेंट हुआ तो ये इंसुलिन बाहर ही रहेगा, सेल में ऑब्जर्व नहीं हो रहा है. इस वजह से क्या होगा, हाइपरप्लेसिया and also hypertrophy. Now because of these two conditions, hyperplasia and hypertrophy, the two things we can see: increase in insulin, and along with insulin there will be increase in amylin. When there is increase in amylin, ये amylin deposit हो जाएगा to our blood vessels, which leads to hypertrophy and hyperplasia. And when this happens, बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन, and due to this gradually decrease in insulin. अगर मैं समराइज करूँ पैथोफिजियोलॉजी टाइप 2 की, तो वो ये होंगी: फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन रिसेप्टर रेसिस्टेंस हो जाएगा, इंसुलिन ने उसको अंदर अलाउ नहीं किया, इंसुलिन रेसिस्टेंस रिसेप्टर हो जाएगा. और दूसरा, अमाइलिन इंक्रीज होने की वजह से बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. And because of this, decrease in insulin and increase in glucose in blood. Now let's see the risk factors. First is genetic disposition. This happened because of one gene, that is TCFL2 gene. Because of this gene, genetic disposition occurs, and because of genetic disposition, a person is diagnosed with type 2 diabetic.
mellitus. Second is due to obesity also, people is caused with type 2 diabetes mellitus. Due to age factor also, middle age, and elderly. During pregnancy also risk is there due to insulin sensitivity. Let's see the symptoms. Now if ब्लड वेसल में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हाइपरग्लाइसेमिया होगा. हाइपरग्लाइसेमिया जब हमारे किडनी में फिल्टर होने जाएगा उससे क्या होगा, ग्लाइकोसूरिया. ड्यू टू ग्लाइकोसूरिया पॉलीयूरिया. आफ्टर पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया, थर्स्टनेस, then sodium and water depletion. This all happens when increase in glucose blood level. Let's see the complications occur in type 2 diabetes mellitus. Due to type 2 diabetes mellitus, the complications like blood pressure, nephropathy also can occur. Nephropathy. It is a nephropathic syndrome जिसमें blood vessels में हाइलिन डिपॉजिट हो जाता है. थर्ड, न्यूरोपैथी. फोर्थ, रेटिनोपैथी. रेटिनोपैथी में कॉर्निया में एक वुल बॉल फॉर्म हो जाता है. फूड अल्सर्स भी देखने मिलते हैं हमें. These are the complications occurs in type 2 diabetes mellitus. Now let's see the investigations for type 2 diabetes mellitus. Same urine test by dipstick method. Also we can do blood test, fasting, non-fasting. Treatment. Let's move further for treatments given to type 2 diabetes mellitus patient. We can give them oral hypoglycemic medicines such as metformin, glipizide, glimepiride, etc. To manage this
type 2 diabetes mellitus, we can do physical exercise. We can decrease our sugar intake. Decrease. We can maintain our weight by losing it, so that if a patient is causing diabetic type 2 because of obesity, thank you for watching. Stay tuned